You gave me the letter I guessed was July. Hello guys, welcome back to my channel. I'm Ritika. So today I have created this look. This is a very simple black smoky eye look. I hope कि आपको ये लुक अच्छा लगेगा और अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक. सो बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मैं जाना तो चलिए. Okay, so first I'm going to do my hairstyle and for that I'm just going to make a bun. सबसे पहले तो मैं एक messy bun बनाऊंगी and then I'm just going to secure it. Okay, so before applying anything on my face, I'm just going to moisturize it first with the help of this Nivea cream. इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी एंड अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी अपनी स्किन को, बिकॉज मेकअप से पहले आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड मेक श्योर कि आपके जो हाथ हो वो क्लीन हो. लाइक फेस पे अप्लाई करने से कुछ भी पहले मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करें. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लैक्मे एब्सोल्यूट मूड फाउंडेशन. सो ये एक बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है. इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूंगी. की जो कवरेज है वो बहुत ही मीडियम काइंड ऑफ कवरेज है. ये आपको ज़्यादा कवरेज नहीं प्रोवाइड करता है. सो ये डे टाइम फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है. And then I'm just going to conceal my face with the help of this ADS concealer stick. To bronze up my face with the help of this Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter palette. And then I'm just going to apply blush with the help of the same palette. And after that I'm just going to moisturize my lips. जब भी आप स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको लाइट से डार्क जाना चाहिए. तो आपको पहले यहाँ पे लाइट शेड अप्लाई करना चाहिए. सो मैं इस पैलेट में से सबसे लाइट शेड यानी कि मैं सबसे पहले ये वाला शेड अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पे. Help of this flat brush, I am going to pick this gray shade and apply it on my eyelid. अप्लाई काजल. मैं इसको अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई करूंगी एंड देन एक फ्लैट ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. With the help of this flat brush, what I'm going to do is I'm just going to pick this white shade and इसको मैं अपनी water line पे अप्लाई करूंगी. इस वाले फ्लैट ब्रश को जिससे मैंने अपनी आईलिड का काजल स्मच किया था, मैं ये वाला ग्रे शेड दोबारा से अप्लाई करूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे. काजल एज वेल. That brush, I'm going to pick this red shade and apply it on my inner corners of eyes.
Okay, so and then I'm just going to apply mascara. I'm going to fill in my eyebrows with the help of my Blue Heaven eyebrow pencil. And I'm just going to apply eyeliner as well. And then I'm just going to draw a basic liner. First, I'm going to outline my lips with my Lakme Lip Enrich Crayon. And then on top of that, I'm going to apply my matte Incolor Matte Me Ultra Smooth Incolor lipstick. So that's all for this look. I hope कि आपको ये हेयर स्टाइल एंड ये मेकअप अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक. बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. टिल देन बाय.